we are going to learn about three new formulas, that is to find a minimum value, maximum value and average for the each month. एक अगर मुझे फाइंड करना है कि मैंने जनवरी में या किसी भी मंथ में सबसे ज्यादा कितना अमाउंट खर्च किया है, कितना अमाउंट स्पेंड किया है या मिनिमम कितना किया है, तो पूरी एक्सेल शीट में देखने की बजाय मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सर्च कर सकती हूँ. तो आई एम गोइंग फॉर द फॉर्मूला. आई राइट मैक्स. I'll find three things: max value, minimum value and average. What was the average amount I spent on various bills in each month? So how will you find the maximum value you spent? How the formula is equal to max bracket open. You will select the range from which you have to find the maximum value. Like from C4, मुझे C4 से C8 तक के बिल्स के वैल्यू में फाइंड करना है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जो मैंने स्पेंड की है. And now the bracket close and enter. See, it will show you the maximum value I spent is 3,500 rupees. Like in this, in all the months you can copy the same thing. You can find through same is equal to max. Either you can write formula in each cell for each month, or you can simply see in this month also it is 3,500. You can simply copy this figure and paste it. The formula will be copied only, not the figure. By default, in my Excel sheet, the total amount is 3,500. Let it, I change it to 3,800. Then the formula will be changed, that is 3,800 will be the maximum amount I spent in the month of March. For minimum value, is equal to min bracket open. Same process, you will copy the cells or select the cells, close the bracket and enter the button. 850 is the minimum amount I spent in January. You will see कि हम तो इसको ऐसे ही देख पा रहे हैं, बट ये स्मॉल डेटा है. कभी कभी आपको बहुत ही लार्ज डेटा पे वर्क करना होता है जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो सिंपली स्क्रॉल करके देखने की अलावा आप इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों ने मान लो स्कूल का रिजल्ट प्रिपेयर किया है और आपने देखना है टोटल में से यू हैव 500 स्टूडेंट्स, देखना है कि किसने टॉप किया है, मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं. तो आप उस टोटल की रो को सिलेक्ट करिए एंड फॉर्मूला लगाइए, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे. लाइक दिस यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट टू द अदर सेल्स. यू कैन सी ओनली द फॉर्मूला विल बी कॉपीड, नॉट द figure. You can see in the formula bar the formula is being copied. Same wise, if I have to find the average, how will I find the average? I have to find कि मैंने average कितना spend कर रही हूँ मैं हर month. How will you find? Is equal to average bracket open. You will select the range for which you need the average value and close it, and your average is 1850. I am spending 1850 rupees on an average in the month of January. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिंपली फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं. ये आपका हर मंथ का एवरेज अमाउंट आ गया है. Hope you all liked the video. I am Diksha. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of the new video.